This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman. I'm a professional English language instructor, and I'm also a teacher's trainer. बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि आप टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स दोबारा शुरू कर दें, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई रियली डोंट हैव टाइम फॉर दैट, but I'm trying my level best to take out some time and I will teach free of cost. अगर किसी से पैसे ले लेता हूँ ना मैं और उसको ट्रेनिंग देता हूँ, तो वो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो बेहतर ये कि दुआएं ले लो, तो उससे हमें फायदा हो जाता है। एक तो दुआ भी मिल जाती है और सामने वाले को हम सिखा भी देते हैं। तो मैं संडे को इंशाल्लाह या फिर कल हम एक ऐसा सेशन रखते हैं जिसमें हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से। हम आपको गाइड करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। फ्री सेशन होगा, एवरीबडी कैन ज्वाइन। और अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स हैं, आप किस तरह से कमा सकते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म बता दूंगा। और अगर आप टीचर हैं तो आप किस तरह से अपने लिए रोजगार सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू या फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर किस तरह से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आई विल हैव अ फ्री सेशन फॉर ऑल ऑफ यू इन आफ्टरनून, और मे बी ऑन संडे इन द आफ्टरनून मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कल ऑलरेडी आपका सेशन है आफ्टरनून में मिस मरियम के साथ और रात में भी मिस मरियम के साथ है। तो टुमारो यू गाइज आर बिजी, ऑन संडे यू विल बी फुल। चलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही सर के लेक्चर्स अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोर्स कंटेंट तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है, कुछ बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, तो उनको जहन में मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम आपको पहले, सबसे पहला टारगेट है आपकी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के बाद आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे। टेंसेस और मॉडल्स में जो गलतियां आप लोग करते हैं, याद रखें आपकी जो गलतियां है ना, वो टेंसेस और मॉडल्स नहीं है। मॉडल्स तो आप लोगों ने स्कूल लाइफ में नहीं पढ़े। जो लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि हमने ये सब कुछ पढ़ा है, वो झूठ बोलते हैं। भाई कौन सा स्कूल है जो मॉडल वर्ब्स पढ़ाता है, मुझे भी बता दें कौन सा स्कूल है। मैंने पता नहीं कराची के कितने स्कूल्स के टीचर्स की ट्रेनिंग की है, उनके इंटरव्यूज किए हैं, उनका कोर्स कंटेंट डिजाइन किया है। किसी स्कूल में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं पढ़ाए जाते, सिर्फ 12 टेंसेस पढ़ाए जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े, वो आपने खुद से पढ़ लिए होंगे, यूट्यूब से पढ़ लिए होंगे, पढ़ाया किसी ने नहीं है आपको मॉडल वर्ब्स। ये लैंग्वेज क्लासरूम में ही पढ़ाए जाते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव वर्ब्स, क्वेश्चन टैग्स, कंडीशनल्स, ये लैंग्वेज क्लासरूम में आप पढ़ते हैं। जो स्कूल लाइफ में आप लोग पढ़ते हैं वो टेंसेस और एक्टिव एंड पैसिव है, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन है, वो भी आप लोगों के लिए। तो हमने एक नई मॉडिफिकेशन की है। हम, पहला टारगेट हमारा फ्लुएंसी है, दूसरा हमारा टारगेट आपकी एक्यूरेसी है, ताकि आपकी फ्लुएंसी में जो गलतियां हैं आप थोड़ी सी दुरुस्तगी की तरफ जाए। और उसके बाद तीसरे महीने में हम आपको राइटिंग स्किल्स की तरफ लेकर जाएंगे। आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाई जाएगी। आपको मैं छोटे छोटे टॉपिक्स दूंगा कि लिखो इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहला टॉपिक मैं आपको बता दूं, इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर लिखिए। आज आपका जो डिस्कशन सेशन होगा, देखो, लेकिन उससे पहला जो स्टेप है ना, बोलिए। आप 2 महीने में अगर इंटरनेट एक टॉपिक आ जाता है, आप इसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं, तो बेटा फिर आपके पास, इसका मतलब ये है कि यू हैव गॉट द आइडियाज। लेकिन अगर आप बोल भी नहीं पा रहे तो आप लिख भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आइडियाज नहीं है। तो आइडियाज जनरेट होते हैं लोगों को सुनने से। when you listen to different people you get different ideas। आज आपकी डिस्कशन का टॉपिक मैंने बता दिया है, इंटरनेट है उसकी थीम। आपको इसी तरह से जब आप ज्वाइन करेंगे मिस तबस्सुम की क्लास को, तो उनके पास मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं। जो आइल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको आने वाले वक्त में आइल्स के अंदर अपेयर होना है, उनके पास मुख्तलिफ टॉपिक्स है। कभी वो शॉपिंग का टॉपिक लेकर आ जाएंगे, कभी वो टॉपिक एक्सीडेंट्स लेकर आ जाएगी। इसी तरह के वो टॉपिक्स लेकर आती है, उसके ऊपर 4-5 सवालात होंगे एंड यू विल बी आंसरिंग।
जब आप बोलने के काबिल हो जाएंगे तो तीसरे महीने में आपसे कहा जाएगा आइए लिखते हैं, लेकिन लिखने की जो जबान है वो एक्टिव नहीं है। बोलने की जबान एक्टिव वाइज होती है, जो लिखने की जबान है वो पैसिव वाइज है। अब देखें, आप लोग जब इंटरनेट पे आज बोलेंगे, यूं बोलेंगे, वी यूज इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन। एक जुमला मैंने आपको दे दिया, याद कर लें। इंटरनेट हेल्प्स अस टू स्टे कनेक्टेड विद आवर लव्ड वंस। आपने जो जुमला बोला ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन जब आप बेटा लिखेंगे ना, तो आपका सेंटेंस खूबसूरत कब होगा? जब वो पैसिव में होगा। इंटरनेट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। इंटरनेट इज यूज्ड in schools, colleges, university, business organizations, and government sectors. इंटरनेट इज यूज्ड, ये है पैसिव वॉइस का जुमला। ये हमारे बच्चा नहीं जानता। लिख अब, हाँ भाई, ये आता है, आई ईट एन एप्पल एंड एन एप्पल इज ईटन बाय मी। लेकिन ना आप लोग अपनी राइटिंग के अंदर पैसिव का इस्तेमाल करते हैं, और स्पोकन की तो बात ही ना करें। स्पोकन में तो पैसिव आप इस्तेमाल अभी करते ही नहीं। हमने अपना जो तीसरा महीना है उसमें कोशिश यही है कि आपकी राइटिंग के अंदर भी पैसिव आए और आपकी स्पोकन में भी पैसिव आए। और जो अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, याद रखें, वो पैसिव का इस्तेमाल अपनी जबान पर करते हैं। लोग कहते हैं पैसिव इज अ रिटन लैंग्वेज, बट पैसिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कॉन्वर्सेशन, इन योर स्पोकन। मेरा सेंटेंस दोबारा सुन लें। पैसिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन स्पोकन। मैंने पैसिव का जुमला बोला, बजाय ये बोलने के वी कैन ऑल्सो यूज पैसिवाइज इन आवर कॉन्वर्सेशन, पैसिव कैन बी यूज्ड इन आवर कॉन्वर्सेशन। और ये आप कब बोलना शुरू करते हैं? जब आपका एक्टिव अच्छा होता है। आपने एक्टिव, जब भी मैंने आपसे कहा पहले फ्लुएंसी, उसके बाद टेंसेस और मॉडल्स में ग्रिप लानी है, कि आप टेंसेस और मॉडल्स आपकी जबान पर आ जाए। जब ये एक्टिव के सेंटेंसेस जबान पर होंगे, फिर वो पैसिव के सेंटेंसेस आपकी रिटन में भी आएंगे और आपकी स्पोकन में भी आएंगे। आ गई बहुत अच्छे से बात समझ? कोर्स कंटेंट क्लियर हो गया है? बस याद रखें, आपको टाइम स्पेंड करना है। आप आटा गूंद रही हैं, आप चाय बना रही हैं, क्लास चल रही है, कान में एयरपोर्ट लगा लीजिए। आप अपने आप को म्यूट पे लगा दें, नो प्रॉब्लम। हैंड रेज मत करें, टीचर आपको इंटरप्ट नहीं करेगी, ठीक है? लेकिन अब ये नहीं कि पूरे 9 घंटे में बस काम में मसरूफ है। 2 घंटे ऐसे हो जिसमें आप बिल्कुल अपने आप को क्लास वाले माहौल में रखें, ठीक है? क्लास वाला माहौल समझते हैं, नोबडी इज इंटरप्टिंग यू, नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू एट योर होम। ये आपका टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल आपका एक लास्ट डेमो सेशन है कुछ स्टूडेंट्स का, जो अभी वार्म अप सेशन और डेमो सेशंस ले रहे हैं। कल आपको मेरे साथ कोई सेशन नहीं होगा, कल आपका सेशन होगा मिस मरियम के साथ। एक दोपहर में वो सेशन कंडक्ट करेंगी 3 से 4, और एक सेशन वो कंडक्ट करेंगी रात में 8 से 9। शी इज योर प्रोनाउंसिएशन टीचर एंड शी विल कंडक्ट योर क्लासेस 2 days in a week, थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका डिस्कशन सेशन होगा। मिस मरियम, मिस मारिया, मिस परी एंड मिस तबस्सुम, 4 टीचर्स आपको ये असाइन कर दिए गए हैं। आपका स्पोकन टीचर मिस कोमल, ग्रामर विद SKH, एंड मिस बुशरा। मेरे साथ मेरी एक असिस्टेंट भी होती है, मिस बुशरा। शी इज ऑल्सो वेल क्वालिफाइड, एंड sometimes if I am not available, she is available on my place। और वो अमूमन मॉडल वर्ब्स का टॉपिक या कंडीशनल्स का टॉपिक वो पढ़ाती भी है। बेसिक्स मैं पढ़ाता हूँ, टेंसेस मैं पढ़ाता हूँ। मैं आपको बीच में अगर मेरे पास कहीं पर टाइम की शॉर्टेज आती है, या अगर मेरा कोई बीच में सेशन क्लैश होता है, देन शी इज अवेलेबल। मोस्टली ऐसा होता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब समझते हैं, यानी कि 100 में से एक मरतबा ऐसा होता है, ठीक है? कभी कभार मेरे साथ अगर कोई इमरजेंसी होती है, देखिए इमरजेंसी आपके साथ भी होती है, मेरे साथ भी हो सकती है। बूढ़े माँ बाप है मेरे, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, तो तबीयत कभी खराब हो जाती है। तो इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है, तो मैं मॉर्निंग का सेशन या आफ्टरनून के सेशन को एक्सक्यूज कर लेता हूँ। तो उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट आ जाती है, कोई दूसरा टीचर आ जाता है।
ऐसा होता है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है ना। आपके पास भी अगर ये तीन फैसिलिटीज है तो ये मेरे लिए भी ये तीन ऑप्शंस है ना, कि मैं अगर कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी में तीनों में से कहीं एक सेशन में स्किप कर हो गया, कभी सुबह मैं सोता रह गया, तो आप, अब जून जुलाई आ रहा है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, तो हमारे लिए उठना बहुत मुश्किल होता है, वरना तो हम सुबह 8 बजे उठ जाते हैं। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं, एक दफा से ना ब्लू मून तो होगा, एक दफा होगा। अगर सर नसीब सुबह 10 बजे नहीं उठे तो समझ लीजिएगा सर सो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि रात में हम बहुत देर से सोते हैं, लेकिन अपना रूटीन हम सुधार रहे हैं। रमजान के बाद से अभी तक रूटीन सुधरा नहीं है। ये है 1-to-1 डिस्कशन जो आग लगा रहा है, लोग उसके पीछे पागल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बोलने को मिलने वाला, आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं, हमने उनको 1,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन दे रखी है। आप 1,000 रुपए जमा कराते रहिएगा, अगले, जब तक आपको 1-to-1 सेशन चाहिए आप अवेल करते रहिए। ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ SKH, ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसने कोर्स मुकम्मल नहीं किया और वो आ जाए इस सेशन के अंदर। तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे इस सेशन के अंदर हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स, एंड यू विल हैव, दे आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, तो आपको बात करके उनसे अच्छा लगेगा। समझ रहे मेरी बात। यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम इन दिस सेशन इंशाल्लाह। ये टेस्ट ट्रांसमिशन है हमारी, 1 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन है। आप लोग फर्स्ट डे से इंशाल्लाह इसका आगाज कर रहे हैं। रमजान में भी चल रही थी, आइल्स के स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिव्यूज आए, तो हमने इसको आपके सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं 15 दिन बाद आपसे रिव्यूज लूंगा, फिर 1 महीने बाद इसके रिव्यूज लूंगा। और इसके अंदर मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ। 1-to-1 डिस्कशन के अंदर जो टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो दे आर ऑल्सो सरप्राइज, यू विल एंजॉय। इसमें क्या करना है, हो सकता है आपके पास कोई vocabulary हो, you have to discuss that word. You may have any topic to discuss, you may have any situation to discuss, you may have any problem to solve, you may have any you may have any game, you may have any puzzle. You will be having different kind of spoken activities which native people have introduced to improve spoken English. हो सकता है कोई लतीफा लिखा हो, वो आप पढ़े और आपको मजा आएगा। ठीक है ना। हो सकता है कोई एक्सरसाइज आपके पास आ जाए। तो ये हर 15 मिनट में हमारी एक्टिविटीज बदलती रहेगी उसके अंदर। यू विल बी ऑलवेज हैविंग अ ग्रेट फन। आई विल बी ऑलवेज विद यू इन दिस सेशन, राइट। ये है आपका फ्राइडे स्पेशल। पार्टी खत्म नहीं हुई है। फ्राइडे को आपका एक स्पेशल सेशन है, आपका प्रोनाउंसिएशन सेशन भी होगा फ्राइडे को। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, पूरे दिन में जो आपके सेशंस हो रहे होंगे उसमें कहीं पर आपकी डिबेट भी होगी, आपका प्रेजेंटेशन सेशन भी होगा। मिस कोमल प्रेजेंटेशन सेशन लेती है, याद रखिएगा। फ्लुएंसी टेस्ट भी होगा आपका, आपका रोल प्ले की एक्टिविटी होगी, कोई भी सिचुएशन आपको दे दी जाएगी। और फिर एक हॉट सीट की भी एक्टिविटी होगी आपकी। और एक ऐसा भी होता है कंटिन्यू द स्टोरी, आपको कोई भी एक सेंटेंस लिख कर दे दिया, एवरी डे माई हस्बैंड वेक्स अप एट 7, आगे एंड कंप्लीट दिस स्टोरी। वन डे आई वेंट टू द मार्केट, फिर क्या हुआ, आपने क्या देखा, आपने क्या किया। प्रेजेंटेशन योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, husband's daily routine. Has social media taken over our leisure time? Exactly, I agree with this statement. Yes, social media has taken over our leisure time. जो वक्त हमारे पास हम बच्चों के साथ गुजारते थे, आज वो हमारा मोबाइल फोन में गुजर रहा होता है। बच्चे भी मोबाइल पे लगे होते हैं। जो तरबियत हम करते थे बच्चों की, आज वो नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे मसरूफ होते हैं। कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर मसरूफ है। तो फ्राइडे इज ऑलवेज वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑन फ्राइडे यू हैव डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, ये आपकी टॉप नॉच फैकल्टी आ गई है, जो आपको इंशाल्लाह फर्स्ट मई से ज्वाइन करेगी। ये हमारा पेमेंट मेथड है। जिसने अब तक फीस सबमिट नहीं करवाई है, कल आखिरी दिन है, सबमिट करवा दीजिए। 1 मई से आपके ऑफिशियल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जिन लोगों ने ये लाइव डेमो सेशन अटेंड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और जो रिकॉर्डेड सुन रहे हैं उनके लिए काफी है, इतनी बातें वो सुनना और फैसला करना कि आया इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। साथ में ये बात भी बता दूं कि आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड गूगल क्लासरूम मिलेगा, और ये लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलता है।
मतलब आपने तो हमारे पास दाखला ले लिया, सर तो पढ़ाते रहेंगे जब तक जान है, ठीक है ना, किसी की जान किसी के टीचर, ठीक है ना। तो अब ये देखें, किसी के पापा जान हमारी हमारे हम अगर फिल्म बनाते तो मतलब किसी के पापा जान और किसी के टीचर। तो ये देखें, ये आपका गूगल क्लासरूम है, और ये फाउंडेशन लेवल का आपका आगाज हो गया। आज आप लोगों का बस लेक्चर शुरू होने जा रहा है। पहला टेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। जिन बच्चों ने आज फीस सबमिट करवा दी है वो मुझे अपनी जीमेल आईडी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो आप लोगों को इस गूगल क्लासरूम में ऐड कर दिया जाएगा। और जब तक हम पढ़ाते रहेंगे, हमारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे यहाँ पर, आपके पास ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है ना। आपको किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो, आप इस पे कमेंट कर दिया करें। अब जैसे एक बच्ची ने कमेंट किया, नोट्स कहाँ है, मुझे पीडीएफ फाइल नहीं मिल रही, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये मुझे यहाँ से नजर आता है। अब जैसे इस बच्ची ने कुछ कहा था, इसने कहा था देर इज नो स्लाइड ऑफ वर्ब एग्रीमेंट, तो फिर हमने उसको पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद उसको मैसेज कर दिया अपलोडेड। देखिए बात हुई थी दिसंबर 2016 और उसकी हमने बात को मार्च में सुन लिया ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च में जाकर अमल किया हमने उसके ऊपर। और इसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे, आप यहाँ पर बिना झिझक कमेंट कर सकते हैं। कोई लेक्चर अच्छा लगे तो आपका सर, और सर कह के पता नहीं कहाँ चली गई हो। फिर यहाँ पे भी कमेंट आया हुआ है, क्या है, वीडियो नॉट शो, वीडियो नहीं आ रही, कौन सी वीडियो नहीं आ रही भाई? विल हैव टू का कोई, विल हैव टू की जो वीडियो है वो फ्यूचर सिंबल के साथ ही आ जाती है। जब आप फ्यूचर सिंबल पढ़ेंगे तो इसके अंदर ही वीडियो है। इसकी वीडियो कहाँ गई है अल्लाह? बाकी वीडियोस भी क्या नजर नहीं आ रही? ये वीडियोस कहाँ चली गई बाबा? बाबा जानी वीडियोस कहाँ है? वीडियोस डाटा कहाँ चला गया है अल्लाह? ये कहाँ हो गया भाई? कल तक तो था। रिफ्रेश करते हैं, अल्लाह खैर करे। व्यू मटेरियल, वापस जा रहे हैं हम गूगल क्लासरूम में। अच्छा, नहीं वो कभी कभार ऐसा होता है, रिफ्रेश किया तो आ गई सारी वीडियोस। वही हम टेंशन हो गई थी, इतनी मेहनत से हमने चीजों को अपलोड किया कि सारी फीचर से बिल के ऊपर सारी वीडियोस मौजूद है। ठीक है बेटा, चले। गूगल क्लासरूम हो गया, आज का लेक्चर शुरू होने जा रहा है। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। मेरी आपसे अगली मुलाकात इंशाल्लाह 1 मई को होगी। और आज का सेशन एक बहुत अच्छी बात से शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले अपना माइंडसेट बना लेंगे। माइंडसेट आपका अगर होगा ना, ये रहा आपका माइंडसेट, बी ऑप्टिमिस्टिक, मैं कर सकती हूँ, रोशन पहलू रहिए, पुरुमीद रहिए, मैं कर सकती हूँ। नहीं भाई ये लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं, ढूंढ लो बेटा, पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लो, मैं कहता हूँ चिराग लेके ढूंढ लो, हम जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। मैं ढूंढता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि यार कोई हमारी तरह मेहनत करके पढ़ा रहा हो इतनी कम फीस में। इतने सारे टीचर्स, 6 टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है 6,000 रुपए में कोई एक इंसान। 3 महीने, 3 महीने, 6 टीचर्स। बेटा सिर्फ एक टीचर का पे स्केल बता रहा हूं मैं आपको। आप कोई भी एक टीचर हायर कर ले 1 घंटे के लिए, वो आपसे 5,000 रुपए चार्ज करेगा। अब आपको एक इदारा 9 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार है, आपको 6 टीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद भी अगर लोग ये कहते हैं फीस ज्यादा है कम करें, तो बेटा फिर आप पढ़ना नहीं चाहते, आप इस दुनिया में नहीं रहते। महंगाई का आलम तो देखें कहाँ चली गई है। और ये फीस कुछ भी नहीं है। कराची जैसे शहर में आप लैंग्वेज सेंटर की फीस तो जाके मालूम करें, 5,000 से नीचे नहीं है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, आईडी कार्ड के चार्जेस, मटेरियल चार्जेस, आपको पूरा मटेरियल मिल गया, लाइफ टाइम एक्सेस मिल गई आपको, कौन देता है? कोई भी नहीं देता। लेकिन क्योंकि सर की नीयत बहुत साफ है, पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि हमको कभी मत छोड़ो। और हमसे पढ़ो, सीखो और फिर हमारे साथ पढ़ाओ। हमसे सीख कर फिर अपना इदारा स्टार्ट करो, हमसे मशवरा करो, हम आपको इसकी बेटर रियलिटीज भी बताएंगे। ठीक है ना, कि इसके पीछे कितनी बेटर रियलिटीज है, हम कितना लोगों की बातों को सुनते हैं।
फिर लोग उल्टे सीधे कमेंट्स फेसबुक पे करते हैं, फिर अफसोस भी होता है। नाम जब नहीं बताओगे तो भाई हम तुम्हें ग्रुप में कैसे रखेंगे, नाम तो बताओ ना। अब तो हो सकता है लड़के हो, नाम बता नहीं रही आप, फिर उसके बाद आप उल्टे सीधे कमेंट्स कर रही है, बैड एक्सपीरियंस। तो सब्र नहीं है लोगों में। हमें जब तक डिटेल्स नहीं मिलती हम आगे आपको फॉरवर्ड नहीं करते, हम ग्रुप से रिमूव कर देते। ठीक है, चलो माइंडसेट बेटा, माइंडसेट बना ले सर मैं कर सकती हूँ, आई एम श्योर यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये 4 सेंटेंसेस आपकी जिंदगी को बदल देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने मोबाइल फोन में ये 4 सेंटेंसेस का वॉलपेपर लगा लीजिए। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। इसको देखा करें रोजाना, इसको पढ़ा करें, बोला करें। आज सोने से पहले 40 मरतबा ये जुमले आपको बोलने हैं। इससे क्या होगा, अंग्रेजी आ जाएगी। इससे ये होगा कि आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। इंसान जैसा बोलता है वैसा होता है, इस बात पे यकीन है आपका? इंसान जैसा बोलता है वैसा होता है। डू यू बिलीव इन दिस सेंटेंस? इंसान जैसा सोचता है वैसा होता है। डू यू बिलीव इन इट और नॉट? यस और नो? आपने सोचा होगा ना, तो आपको एक इदारा मिला। बगैर सोच के तो आपको ये इदारा नहीं मिल सकता था। आपकी सोच में होगा, आप फेसबुक यूज कर रही होगी, जब भी तो ये इदारा आपके सामने आया। ठीक है ना? या आपने सोचा भी नहीं था, आपको ये मिल गया। कभी कभार ऐसा भी होता है, हम जो सोचते हैं हमें वो भी मिल जाता है, और जो नहीं सोचते अल्लाह पाक वो भी दे देते हैं। हमारी सोच से बढ़कर हमें मिल जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए इंसान को हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो अपनी सोच को अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। सर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम द बेस्ट। कभी ये ना कहे सर जी हमारा 1 महीना हो गया है, हमें तो अंग्रेजी नहीं आ रही है सर जी, ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था कि हमें अंग्रेजी आ जाएगी। तो बहन आपने 6ठी जमात तक पढ़ा है, अब आप चाह रही है कि आप अंग्रेज की बच्ची बन जाए। हालात और वाकयात सबके साथ एक जैसे नहीं है ना। आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। अगर मैट्रिक है तो आपको मैट्रिक किए हुए 1 साल होना चाहिए। आपने मैट्रिक किया और आपको 10 साल हो चुके हैं, तो बेटा फिर आपको 3 महीने में नहीं, तकरीबन 9 महीने में अंग्रेजी आएगी। क्योंकि आपकी मशीन 10 साल से बंद पड़ी हुई है। अब आप चाह रही है कि बिल्कुल अंग्रेज की बच्ची बन जाऊं मैं 3 महीने में, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, आपने इंटर किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, रिसेंटली आपने ये काम किया, आपने पढ़ाई को छोड़े हुए 1 साल हुआ है, देन इट्स गोना वर्क, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। आपने मास्टर्स किए हुए आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप बच्चों को घर में पढ़ाती है, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। आप स्कूल में पढ़ाती है, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। लेकिन बस आपने आपकी जिंदगी किचन में गुजर रही थी, मोबाइल फोन में लगी थी, एसकेएच का ऐड देखा आपने, जो आ गई आज क्लास में चाय बनाकर, अभी 10 साल से किताबें नहीं खोली है। तो बेटा अब 3 महीने नहीं लगेंगे आपको, आपको ज्यादा वक्त लगेगा। समझ रहे मेरी बात? मैं हर बात बहुत क्लियरली बताता हूँ। देखिए हर इंसान के हालात मुख्तलिफ है। आपने 10 साल में ना बच्चों को आप खुद पढ़ाती है, आप बच्चों को ट्यूशन भेज देती है, बच्चों का से आपकी पढ़ाई का कोई लिंक नहीं है। बच्चा चाटे घूसे लाते, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, प्लस माइनस भी नहीं करवा रही बच्चों को, इंग्लिश बुक्स की रीडिंग उनके साथ नहीं कर रही है। तो बेटा फिर अब चाह रही है कि मैं अंग्रेजी बोल लूँ, तो भाई फिर वक्त लगेगा। समझ रहे हैं ना? मेरे पास ये केसेस आते हैं, इसलिए मैं आपको ये बिटर रियलिटीज बता रहा हूँ। बट इफ यू आर इन टच विद द स्टडीज, यू आर हेल्पिंग योर किड्स इन स्टडीज, यू आर using social media a lot, you are watching English movies, you are listening to English talk shows, it means now you are going to improve your spoken English. क्लियर? लेकिन मशीन बंद थी 10 साल से, अब अचानक, तो फिर वक्त लगेगा। तो बेटा सोच को अच्छा कीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नामुमकिन कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ पेपर पर, यू, बिकॉज आई एम 110% श्योर that you will start speaking English within a month if you give me your 3 hours. अगर आप मुझे अपनी जिंदगी के 3 घंटे दे दे रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, आई विल मेक द डिफरेंस। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक यू स्पीक इन इंग्लिश। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपको अंग्रेजी बुलवाने में। आई जस्ट वॉन्ट योर 3 hours।
एवरी डे। आपकी कम से कम 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे। ठीक है, चले आगे चलते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला टारगेट फ्लुएंसी है, उसके बाद आपके पास आएगी एक्यूरेसी। सर आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, बताइए मैं कैसे सीख सकती हूँ। सर व्हाट आर दोज एरियाज वेयर आई हैव टू वर्क। आप में से कुछ स्टूडेंट्स शायद ऐसे हो जिन्होंने मुझसे ये बात कही हो, जब भी मैं कोट कर रहा हूँ ये बात। सर समझ तो आ जाती है, लिसनिंग भी अच्छी है, बस मेरी स्पीकिंग इम्प्रूव करवा दीजिए। सर बस मुझे अपनी राइटिंग और स्पीकिंग पे काम करना है। ये दो ही बातें हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स करते हैं। ये 19 साल से मैं यही बातें सुनता हुआ आ रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्पोकन स्किल्स, आई जस्ट, ऐसी कोई क्लास बताएं जहां मैं बोल सकूं। सुनने में कोई तकलीफ है आपको? नहीं, सुन तो मैं लेती हूँ, बस मुझे बोलना है तो बोलो, शीशे के सामने खड़ी होके बोलती रहो। बोलना है, बोलने से अंग्रेजी थोड़ी नहीं आती है भाई। नहीं नहीं सर, देखो, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। मैंने बहुत बहस की है इसके ऊपर, और मैं हमेशा जीतता हूँ वेर एवर आई डू एनी आर्ग्यूमेंट्स। You do not learn, you do not start speaking by speaking. You have to start listening first if you want to speak anything. If you want to speak Chinese, आप सबसे पहले क्या करेंगे? लाजमी सी बात है, आप उसकी साउंड्स को पहले सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आप स्पीकिंग की तरफ आएंगे। जब आप लिसनिंग करते हैं तो आप लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, आप समझते हैं लिसनिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। सर देखिए, समझ तो आता है ना, बस आपकी लिसनिंग के लिए आपकी यही है। जबकि आपको पता है लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग के बाद एक और चीज भी आती है, वो है स्टोरिंग। और मैं एक और भी इसके अंदर वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग, स्टोरिंग, और स्टोरिंग के बाद आप इसको रिकॉलिंग। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर उसके बाद आप उस चीज को अपने पास स्टोर भी तो करें, उसको सेव भी तो करें, उसको कॉपी भी तो करें। यू हैव बीन लिसनिंग टू मी सिंस मॉर्निंग। कुछ बच्चे दोपहर में भी थे, रात कुछ सुबह में भी थे, रात के सेशन में भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं वो। दे हैव बीन लिसनिंग टू मी। आज का मेरा कोई सेंटेंस याद हो, कोई वोकैबुलरी याद हो, तो जरा चैट बॉक्स में लिखकर भेजें, सर ये आपका वर्ड है जो मैंने कॉपी किया। मुझे आज भी अपने टीचर के अल्फाज याद है। आई स्टिल रिमेम्बर माई टीचर्स वोकैबुलरी। आई यूज्ड टू लिसन, and I can firmly say that I listened from my teacher's mouth. He did not write it on the board. He simply spoke. I listened and I saved it in my memory. That was like one of the words, gobbledygooks, difficult words, mumbo jumbo. These are the words I did not read myself. I listened them, and then I uh, copied them, and then I have been revising, I have been recalling. That's why they are in my active vocabulary. जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, समझने के बाद जो आप काम नहीं करते, आज से आपको करना है। डिस्कशन क्लास में, प्रोनाउंसिएशन क्लास में, स्पोकन क्लास में, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए आपके पास, एंड यू हैव टू राइट, you have to copy, you have to store, you have to save, so that you can recall, ताकि so that, so अब ये जो देखो ना, मैं जुमलों को जोड़ता हूँ, ये जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं, so that you can recall, ताकि आप उसको रिकॉल कर सकें। आप उसको रिवाइज रिवाइज करेंगे तो रिकॉल करेंगे, रिवाइज करें, आप रिकॉल करें। लिसनिंग सिर्फ जरूरी नहीं होती है दैट यू लिसन यू अंडरस्टैंड। Sir, I listen, I understand. But what else are you doing? Are you storing? Are you revising? Are you recalling? No, sir. आइए बात समझ बेटा। So listening is the key. जब आप सुनते हैं तो आप बेसिकली क्या क्या इम्प्रूव कर रहे होते हैं? जब आप सुनते हैं तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करते हैं,
अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं, अपनी ग्रामर को आप वहीं से इंप्रूव करते हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है सिर्फ सुनने से। देखो मेरी एक ही बात है, मैंने अभी तक एक बात के ऊपर टिका हुआ हूँ, लिसनिंग। लिसनिंग आपको सब कुछ दे देती है, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, मुझे पता है बहुत सारे गायब हो जाएंगे, जो गायब हो जाए वो मेरी इस बात को याद रखिएगा, जिंदगी में सिर्फ लिसनिंग कर ले, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। फिर आपको याद आएगा, फिर आपको हमारी बातें याद आएंगी। लेकिन मैंने ऐसी अपने 19 साल में 5 खवातीन देखी है जिनकी मैंने जब अंग्रेजी सुनी तो मैं पूछने में मजबूर हुआ, बेटा कहाँ से सीखी है, हाउ डिड यू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न, हाउ कैन यू स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश? So they replied, we actually listen different speakers on YouTube. संदीप आचार्य को आप सुन लीजिए, आप शीरी मजारी को सुन लीजिए, आप अलीना को सुन लें, बहुत उसके फॉलोअर्स हैं। दे स्पीक इंग्लिश ओनली, ये अंग्रेजी बोलते हैं बस। सुनना सुनना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, एंड यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। लेकिन मसला ये कि हमें मजा नहीं आता, हमें मजा चाहिए। तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें मोटिवेशन चाहिए। हमें सर पे डंडा नहीं पड़ता, हमें कोई डांट नहीं पड़ती, तो हम वो चीज करते नहीं है। हमारी आदत है ना, हम लोग चीजों को छोड़ देते हैं। हमें कोई पीछे से जब तक थपकी ना दे, कोई अप्रिसिएशन ना मिले, मोटिवेशन ना मिले, कोई पनिशमेंट ना दे, कोई डांटे ना, कोई नाराज ना हो, हम नहीं करते। सही है ना? भाई हम बेगम को शॉपिंग पे लेकर नहीं जाते, नाराज हो जाती है, तो फिर उनको शॉपिंग पे लेकर जाते हैं। कभी नाराज हो जाती है, कभी वो स्पैगेटीज बनाकर खिला देती है, कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मतलब ये काम करेंगी तो फिर शॉपिंग में जाएंगे हम, वरना हम नहीं जाएंगे। तो यही चीजें, जब आपकी लर्निंग में भी ऐसा ही कुछ है कि जब आपको कोई पनिशमेंट देगा, कोई मोटिवेशन देगा, कोई इंटरेस्ट होगा, कोई एंटरटेनमेंट होगी, कोई कंपटीशन होगा, कुछ प्लेजरिज्म हो, कुछ प्लेजर होगा, मजा आएगा। मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, बातें होंगी। और आपको पता है लड़कियों को, खवातीन को बातों करने का कितना शौक है। बिठा दे दो खवातीन को, घंटों बातें करेंगी। बस उनका टॉपिक होना चाहिए शॉपिंग। देखिए कॉस्मेटिक्स, हमारी कुछ टीचर्स है वो ऐसे टॉपिक्स लेकर आती हैं। व्हाट काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स डू यू नॉर्मली वेयर? Do you like branded cosmetics or local cosmetics? From where do you buy cosmetics? How much do you spend on cosmetics? फिर आपको बताएगा ये तो अपना टॉपिक है। Do you like to wear cosmetics? Okay, your favorite brand. इसमें सब बोलेंगी, जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो भी फर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते। उनका टॉपिक है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। So this is what you do. जब देखिए आप, listening is very important. So you all have to listen. अब आपको अपने ऑनलाइन सेशंस में क्या होता है, मैंने बता दिया। आपने यूट्यूब पे कुछ स्पीकर्स को सुने, वो भी एक रिसोर्स है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आएगा? लाइव सेशंस में। लाइव सेशन का अपना एक मजा है। क्लियर? अब आ जाइए सर, अच्छा कोई आप भी मतलब गाइड करें, हम क्या सुने, आइए हम आपको गाइड करते हैं। हम आपको एक स्टोरी देते हैं, हम आपको नहीं कह रहे आप किसी इंसान को सुने। आपके पास देखिए ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ये स्टोरी आपको सुननी है। अभी आवाज तेज हो जाएंगे। I live in a big house on Santa Monica, and sometimes I don't see anyone all day. अब ये स्टोरी देखिएगा कितनी सिंपल अल्फाजों में लिखी हुई है, इससे क्या क्या हो रहा है जरा देखिएगा। Pamela is a doctor. She's Canadian, but now she lives in a small town near Nairobi, Kenya, in East Africa. She isn't an ordinary doctor. She's a flying doctor. Every day from 8 a.m. to 10 a.m., she speaks to people on her radio. Then she flies to help them. She works 16 hours a day, non-stop, but she loves her job. She isn't married. She has no free time. अच्छा अब ये देखें, this kind of stories, short stories, help you
to improve your pronunciation. अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो सुनने से आपने क्या improve कर लिया? You are improving the pronunciation. You are listening to a native speaker. अगर आपने सिर्फ सुना और अगर दूसरा काम भी आप कर ले, इसको कॉपी करना शुरू कर दे, you will start improving your accent. आपका एक्सेंट भी इंप्रूव हो जाता है अगर आपने नेटिव स्पीकर को कॉपी कर लिया। सिर्फ एक देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला दिया सर ने, लिखे अपने पास, कॉपी नेटिव स्पीकर्स, इमिटेट का मतलब देखो वोकैबुलरी आ रही है। अब ये सुनने के साथ मैंने कहा है पेपर और पेंसिल साथ रखा करो। इमिटेट, कॉपी, मॉक, MOCK, इमिटेट, TATE, imitate, copy or mock native speakers. If you want to speak like a native speaker, you don't have to copy me, you don't have to mock me, you have to mock, you have to imitate like a native speaker. If you want to sound like a native speaker, I don't sound like a native speaker because I don't want to speak like a native speaker. I just want to communicate with you effectively. I just want to pronounce every word clearly so you can understand. आप अपने pronunciations को improve कर रहे हैं. You are improving your accent. You are also improving your sentence structure. She is Canadian, but now she lives. अब यहाँ पर देखें live के साथ S लग रहा है। ये जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो इन चीजों को याद करते हैं। She lives. अब इसके अंदर आप देखें preposition और articles को भी जरा focus करें। In a small town near Nairobi, Kenya, in East Africa. She is not an ordinary doctor. She is a flying doctor. अब एवरीडे को मिलाकर लिखा गया है या अलग करके लिखा गया है, ये चीजें देखो जब रीड करता है इंसान, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, लिसनिंग भी हो रही है, रीडिंग भी हो रही है, यू आर इम्प्रूविंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस स्टोरी। और ये तकरीबन 3.5 घंटे का सेशन है। जैसे ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, ये सेशन की एक्सेस आपको मिल जाएगी और अभी बहुत सारे और सेशंस मेरे यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे इस तरह के, एंड यू कैन improve your sentence structure, vocabulary, fluency and pronunciation. कितना ही आसान एक्टिविटी है ये। रोज आना आधा घंटा सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन नहीं, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब से टाइम कहाँ मिलता है हमारी कौम को। नहीं सर, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। आई विल डेफिनेटली डू इट सर, द वे यू आर गाइडिंग। देखो, एक तजर्बेकार इंसान से पढ़ने का फायदा ये होता है, दे नो द राइट ट्रैक्स। उनको सही रास्ता पता है, उनको पता है कि भाई ये वो रास्ता है जो सीधा आपकी मंजिल पे जाता है, एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योरसेल्फ। अब आप लोग माशाल्लाह शायद मुझसे ज्यादा काबिल लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमने तो सिर्फ 3 मास्टर्स किए हैं, 19 साल का तजर्बा है। आप लोगों का तजर्बा शायद मुझसे ज्यादा हो, तो फिर कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हमें ये नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना। तो फिर बेटा आप मेरी नहीं सुनना चाहते तो फिर आप कोई और इदारा देखें, क्योंकि हम आपका ना वक्त जाया करते हैं, ना हम आपको गलत गाइड करते हैं। वी टीच यू ऑथेंटिकली, वी टीच अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। व्हाट आर द मॉडर्न methodologies of teaching English as a language? We do not follow grammar translation method, जो पुराना मेथड है ना, GT मेथड जिसे आप लोग कहते हैं। We follow modern method, functional English, direct methods we follow. That really helps students to improve spoken English. आ गई बात समझ? ये है आपका एक तरीका। हम वापस जा रहे हैं। अब आइए सर, एक मेरा आप अपने बातें जो सवाल हुआ करें चैट बॉक्स में लिख दिया करें, आई विल डेफिनेटली आंसर। सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग। मैं भी अपनी राइटिंग किसी दौर में इम्प्रूव करना चाहता था और मैं गया था। आई वेंट टू अ टीचर एंड आई आस्क्ड फॉर अ सेशन एंड आई वाज रेडी टू पे 10,000 इन दैट एरा। और उस दौर में मैं 10,000 रुपए देने के लिए तैयार था, क्योंकि उनकी फीस थी 1,000 रुपए एक सिटिंग की।
उन्होंने कहा मैं 10 सेशन दूंगा, 10,000 रुपये लूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तुम रीड क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं ग्रामर बुक्स रीड करता हूँ। लिखना क्या चाहते हो? मैंने कहा मुझे आइल्स के एसेज लिखने में तकलीफ होती है, लेटर्स लिखने में, मुझे मेरा आइल्स का पेपर है, तो मुझे लिख, मैं चाहता हूँ मैं लिखूं। तो कहने लगे रीड नहीं करते हो कुछ? मैं कहा सर क्या रीड करूँ? बोले भाई जाके आइल्स के ऐसे रीड करो। उन्होंने एक किताब निकाल कर दी। आप यकीन करें मैंने उस किताब के सारे ऐसे पढ़े। मुझे 2 महीने लगे। उसके बाद मैंने आइल्स का पेपर भी दे दिया। मेरे राइटिंग में बगैर टीचर की हेल्प के 7.5 राइटिंग में आ गए। फिर टीचर ने पूछा हाँ भाई क्या हुआ, पेपर नहीं? तो मैं कहा सर हो गया, क्लियर भी हो गया, 7.5 ले भी लिया हमने राइटिंग में। सिर्फ एक ही काम किया। क्या किया? मैंने सिर्फ रीड किया। अच्छा हमें लैंग्वेज तो आती थी, टीचर तो उस वक्त भी थे हम, हमें लैंग्वेज स्किल्स हमारे अच्छे थे। हमें देखिए नॉलेज अगर आपकी अच्छी है, आपके पास टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल, पैसिव, बेसिक्स, वोकैबुलरी आपके पास है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब है, तो आप सिर्फ रीड कर ले, यू विल स्टार्ट राइटिंग। लेकिन जो लिखना है उसको रीड करें ना। आप पढ़ रहे हैं वसी शाह की शायरी और आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो अखबार में लिखना शुरू कर दें, तो अखबार में आप फिर वसी शाह की शायरी लिखेंगे, है भाई। अब आप मुझसे कहें सर आप इंग्लिश पोइट्री लिख दें, मैं एक पोयम नहीं लिख पाऊंगा। क्यों भाई? मैंने पोयम पढ़ी नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही पढ़ी है भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा पोइट्री हमारा फील्ड, हमारी फील्ड नहीं है, लिटरेचर हम नहीं पढ़ते, हम तो लैंग्वेज पढ़ते हैं। आप मुझसे बोले सर आप एक लेक्चर डिजाइन कर दें, ओहो, इसके लिए तो हम पैदा हुए हैं। पता नहीं कितने स्कूल्स के मैंने करिकुलम डिजाइन किए हैं, पूरे इंग्लिश के क्लास 1 to लेकर 8 तक उनका पूरा कोर्स डिजाइन करके दिया अपने हाथ से कि आप क्लास में क्या पढ़ाएं। उनके एक एक लेक्चर पूरा मैंने टाइप किया, लिखा। ये मेरी फील्ड है। मैं आपके हर क्लास का लेक्चर लेवल वाइज में डिजाइन कर सकता हूँ। मटेरियल मेकिंग आप मुझसे करवा लीजिए, लिखवा लीजिए, जो लिखवाना है लिखवा लीजिए, प्रेजेंट सिंपल जिस स्टाइल से आपको पढ़वाना है पढ़वा लीजिए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं ग्रामर बुक्स, दिन रात हम ग्रामर बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम ग्रामर की पूरी एक किताब लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ? तो अब हमारी एक नई किताब आपके पास आ रही है, इसका पहला सफा आपको आपके सामने, मेरे साथ पढ़ते रहेंगे पूरे 3 महीने में। आप अभी ये फाउंडेशन लेवल की किताब पूरी फाइनल हो जाएगी, और आप देखिएगा इसको कितनी कीमती वक्त निकाल कर मैं इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ। अब आपने इन 4 स्किल्स पे काम करना है। आपको स्पीकिंग और राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी है बेटा, आप लिसनिंग और रीडिंग की टेंशन लें। मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग? आपका जवाब होना चाहिए यस सर। आर यू रीडिंग? नो सर। मैं आपको स्टोरी की एक पीडीएफ सेंड करूंगा, बहुत सिंपल स्टोरीज होंगी, बच्चों के साथ पढ़ लीजिएगा। अब तो बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप उस पर रीड कर सकते हैं, लेकिन भाई टाइम नहीं है ना, पैसा नहीं मिल रहा हमें रीड करने से, बस इसीलिए हम रीड नहीं करते। इफ यू स्टार्ट रीडिंग यू विल स्टार्ट राइटिंग, यू विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ठीक है? बट मैं आपको मैं पता है आपको एक डॉन न्यूज पेपर के अंदर एक आर्टिकल आता है, आंटी अग्नि, बहुत मैं पहले शौक से लाता था और वो पढ़ा करता था, उसमें बड़ी चटपटी खबरें आती हैं। वरना एक और अखबार आता है, वो अखबार का नाम लिख ले अपने पास, इवनिंग स्पेशल, बीवी ने शौहर के घर घुट के हत्या कर दी, इस तरह की खबरें होती है। ठीक है ना? शौहर ने खाना ना देने पर बीवी का हाथ काट दिया, ऐसी खबरें आपको अगर पढ़ने का शौक है, आप ऐसी चटपटी खबरें पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक अखबार आता है, जिस दौर में हम खरीदते थे 8 रुपए का होता था, इवनिंग स्पेशल है, इंग्लिश का अखबार इवनिंग स्पेशल। वरना आप डॉन न्यूज़पेपर ले, डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक लेटर्स टू द एडिटर, वो आप पढ़ सकते हैं। और आंटी अग्नि जो है वो उसमें जरा मजेदार कहानियां होती है, आप वो पढ़ सकते हैं। मैं उसका कोई अगर मेरे पास में संडे को लाकर उसकी कटिंग्स देखूंगा, मिल गई तो वो मैं आपको फॉरवर्ड करूँ। ठीक है? चलो। अच्छा अब ये 4 मॉड्यूल्स पे आप काम कर रहे हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, क्या ये इसके बगैर मुमकिन है? मुझे ईमानदारी से बताइएगा। क्या
अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, क्या इन चारों का किरदार, प्रोनाउंसिएशन आपको सिर्फ कहाँ नजर आएंगे? लिसनिंग में और स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन मैटर करते हैं। लेकिन अगर मैं फ्लुएंसी की बात करूं, अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं, अगर मैं ग्रामर की बात करूं, ये तो हर जगह दिखेगी, ये तो हर जगह दिखेगी। ग्रामर, चाहे आप राइटिंग करें चाहे आप स्पीकिंग, ग्रामर मैटर्स। विदाउट नोइंग प्रॉपर ग्रामर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, विदाउट नोइंग प्रॉपर ग्रामर यू कैन नॉट मेक एनीवन अंडरस्टैंड। आपको ग्रामर नहीं आती ना आप समझ सकते हैं ना आप समझा सकते हैं, लिखना तो फिर दूर की बात है। वोकैबुलरी शॉर्ट हो गई आपके पास, वोकैबुलरी अगर आपके पास खत्म हो जाती है देन यू आल्सो फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और हमारे स्टूडेंट्स के पास वोकैबुलरी सबसे ज्यादा शॉर्ट है। हम लोग रीड नहीं करते ना, वी डू नॉट हैव हैबिट ऑफ रीडिंग, दैट्स व्हाई वी आर वेरी मच पुअर इन वोकैबुलरी। हम लोग बहुत सारे काम नहीं करते जिसकी वजह से हम वी हैव बीन सफरिंग, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम बैठ के लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, खामियां हैं। अब देखो, एक मेरे बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं बेटा, यू मस्ट राइट और मुझसे शेयर किया करो। लाइक सर, व्हेन यू वर स्पीकिंग आई रोट योर वोकैबुलरी फ्लॉ, फ्लॉ FLAW, अब किसी ने लिख लिया FLOW, तो हम फिर जाते थे चेक करते थे डिक्शनरी के ऊपर, FLOW, लो भाई फ्लो, हमने तो फ्लो बोला था, इसका मतलब तो बहना होता है। फिर आपने फ्लॉ, FLAW, फ्लॉ, आप गूगल पे बोल दें फ्लॉ, वो लिख कर वर्ड निकाल कर दे देगा आपको। ठीक है, गॉट इट? तो बेटा वोकैबुलरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। वोकैबुलरी को सर कहते हैं ये आपके बुलेट्स है, ये बंदूक की गोलियां हैं, खत्म हो जाती है, आपको बार बार लोड करनी पड़ेगी। यू विल, यू मस्ट नॉट स्टॉप लर्निंग वोकैबुलरी। आपको पता है मैंने कुछ चीजें अपने सफर में याद की है। मैं कराची से हैदराबाद जा रहा था और कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची आ रहा था और कराची से हैदराबाद जा रहा था, तो मेरे बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा हुआ पड़ा वहीं से मैंने याद किया, बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, ये मैंने वहां से याद किया। तो आप जब ट्रेवल किया करें, आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव किया करें। वो अक्सर आपने देखा है जब आप लोग ट्रैवलिंग, खैर कराची की सड़कों की ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको जुनेद बंगाली का नाम ही नजर आएगा हर जगह, और उसका फोन नंबर, और भी बहुत सारे ऐसी राइटिंग्स होती है जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश किया करें, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग ट्राई टू रीड एवरीथिंग। जैसे वो लक्स के इश्तेहार पहले बड़े बड़े बोर्ड्स पे लगे होते थे, तो वहां देखिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे एक वर्ड बच्ची ने पूछा, सर पेप्सी के साथ एक चला था पेप्सीफाई, तो इसका कोई वर्ड नहीं है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, बहुत पुरानी बात है, याद है टेलीनॉर टॉक शॉक, टेलीनॉर टॉक शॉक, याद आया ये वर्ड? याद, टेलीनॉर टॉक। अब ये टॉक तो समझ आता है लेकिन ये शॉक क्या है? टॉक शॉक, ये क्या चीज है? ये आप लोग सुना करें, देखा करें और फिर इसको एक्सप्लोर किया करें, इस पे रिसर्च किया करें, सर ये क्या हो रहा है। मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, ये कहलाती है कोड स्विचिंग। ये टर्म आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग, ये अगर आप कोड स्विचिंग इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स आप लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी टर्म है। इसके ऊपर पूरी मैंने एक रिसर्च की थी, हमारी एक पूरा एक सवाल था तो उसके ऊपर रिसर्च करनी थी कि हम अपनी जबान में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम दूसरी जबान को मिला देते हैं। मैं आपको देखे अभी बताऊंगा, आप लोग कहेंगे आया अल्लाह, ऐसी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। रोडों पर पानी खड़ा हुआ है, रोड, रोड, रोड का प्लोरल क्या होता है भाई? रोडों पर पानी खड़ा हुआ है, ये रोडो कौन सा वर्ड है?
आपने उर्दू और अंग्रेजी को मिला दिए। प्लेटो, प्लेटो में चावल निकालो, ये प्लेटो, प्लेट्स होता है, ठीक है ना। अब ये जो टॉक शॉक है, ये आपने दो जबान के वर्ड्स को मिला दिए, ये होता है। आप इंग्लिश बोलते बोलते उर्दू पर आ जाते हैं, आप उर्दू में अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इट इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। एक्चुअली आप एक्चुअली अरे अभी आप उर्दू में बात, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा यूज टू हूँ, मुझे समझ नहीं आता, टॉकिंग बहुत मुश्किल है। अब या तो आप उर्दू बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे हमारी मीरा बाजी की जो इंग्लिश है, जैसे मीरा बोलती है हमारी पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस, उनकी उर्दू और इंग्लिश दोनों मिक्स चल रही होती है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही, इट इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। तो आप कोड स्विचिंग कर सकते हैं, इट्स वेरी कॉमन इन आवर कल्चर, इट्स नॉट बैड एट ऑल। लेकिन ये एक जबान के लिए बहुत बुरी चीज है। अगर आप लैंग्वेज रिसर्चर है ना, तो आप उर्दू जबान के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि उर्दू बोलते हुए हम दूसरी जबान के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर अंग्रेजी में। लेकिन उर्दू जबान में आपको फारसी के अल्फाज भी मिलते हैं, अरबी के अल्फाज भी मिलते हैं, संस्कृत के अल्फाज भी मिल जाते हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ और जबानों के अल्फाज आपको उर्दू में मिल जाते हैं। आखिरी बात, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी से मुराद लोग ये समझते हैं कि जबान में फ्लुएंसी, हमारे बोलने में फ्लुएंसी, भाई लिखने में भी फ्लुएंसी होती है। फ्लुएंसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। क्या आप पॉल्यूशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं? सर कैसी बात है यार, इंटरनेट पे लिख लें। सर प्लीज शर्मिंदा ना करें सर, अभी तो हम सीखने आए, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बट यही एक प्रॉब्लम है कि वी आर अनेबल टू राइट, वी आर अनेबल टू स्पीक। और जिस दिन आपके अंदर ये सलाहियत आ गई, याद रखें वो दिन होगा जब आप ये कहेंगे सर नाउ आई हैव गॉट फ्लुएंसी इन माय राइटिंग, आई हैव गॉट फ्लुएंसी इन माय स्पीकिंग, एंड आई हैव गॉट फ्लुएंसी इन माय रीडिंग एज वेल। ठीक है, आ गई बात समझ? गॉट इट? आपको मिस तबस्सुम ने ज्वाइन कर लिया है। शी विल बी विद यू टिल ऑलमोस्ट 8:55, and I also have told you the topic which she is going to share with you, and do participate. So पार्टिसिपेट करें, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस करेंगे, ठीक है, हैंड रेस करेंगे, मिस तबस्सुम आपको मौका देगी बोलने का। मिस तबस्सुम आज इन तमाम स्टूडेंट्स का पहला दिन है, 0 मीटर बच्चे बैठे हुए यहाँ पर सारे, एंड प्लीज इनको थोड़ा सा मोटिवेट भी कीजिएगा, हेल्प भी कीजिएगा, अपनी स्क्रीन शेयर कर ले आप। और उसके बाद जो है वो आज के जो टॉपिक है इंटरनेट, मैंने इनको बता दिया है, तो जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ये सवालात देखेंगे तो और सोचना शुरू कर देंगे। जो स्टूडेंट समझते कि मैं बोल सकती हूँ वो हैंड रेस कर लिया करें। सर ने कहा था सुनना है, अरे तो भाई कुछ 10 लोग सुनेंगे तो 2 लोग बोले भी ना, तो अब हैंड रेस बिल्कुल सर, स्क्रीन पहले जो आपकी बिल्कुल सही थी वैसी रहने दीजिए। हाँ, जिसको स्क्रीन पे अगर कुछ लिखा हुआ छोटा नजर आ रहा है, वो मोबाइल के ऊपर 2 उंगलियां रख के बड़ा कर ले, तो उसको सवाल बड़ा दिख जाएगा, स्क्रीन ऐसी लगी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज माइक कंट्रोल्स भी आप लोगों के पास मौजूद है, आप हैंड रेस करेंगे, मिस तबस्सुम आपका नाम लेगी, अपना प्रॉपर नेम मेंशन कीजिए, और पहले मिस तबस्सुम थोड़ी सी इनको मोटिवेशन दिला दीजिएगा, थोड़ा सा हौसला, उसके बाद फिर मोटिवेशन के साथ यू मे स्टार्ट। थैंक यू। Thank you so much, sir. Hello, everyone. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Hope you all are doing great. And you warm welcome you all in my English speaking section. I hope you will enjoy it a lot here. So firstly, let me introduce myself. After that, I will know about yourself. So my name is Tabassum. I'm your English facilitator. You can say that, or teacher also. And I've been teaching since last 10 years. Teaching is my passion and profession also.
English is my favorite subject since my childhood till yet. So that's why I choose this as a profession too. I hope you will enjoy a lot in my class. You will learn a lot in my class. Firstly, I want to share a few things with you. No need to get worried if you are not good at English because you are a learner. If your English is not good, you are unable to speak English, so no need to get worried. I'm always here to facilitate you all. Never ever think that you are unable to speak and your English is pathetic and worse. Not at all. Everybody can speak English. English just need practice. The more you will be practice, you will able to speak fluently soon. But practice is mandatory. Are you getting my point, students? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. change your mindset. Came out of your comfort zone. If you are here to learn, so pay your full attention and focus towards learning. Wherever you feel any difficulty regarding English speaking, English learning, listening, you can ask freely any question to me. I'm not a formal or typical teacher. I don't feel mine. The more you will ask, I will feel like Okay. I will feel good and be comfortable to ask me. I'm not strict teacher. Okay, I'm very friendly. These things were I want to know to you all, and now it's your turn. One by one, I'll call your name. You have to tell me something about yourself, a brief introduction, not detail. Like just tell me from where you belongs to, what's your qualifications, why are you learning English, if you're doing a job. So just give me a brief intro about yourself. Okay, Yes, are ma'am. you getting me, or Yes, is it ma'am. difficult to understand me? No, it's nothing difficult to understand. So we Okay, can if understand. still you feel any difficulty, अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही इंग्लिश में, so you can at the spot you can ask me. Even you can ask me because you are now at initial stages. So in a first few days, I'll allow you to ask in Urdu, but after that, it's mandatory to speak only English. Because if you will not speak English, so how can you learn and how can you can become fluent? Okay, so keep these things in your mind and. If you feel any difficulty, if something is unable to understand for you, so at that point you can ask me. And if you feel hesitation to speaking, so you can text me. There is an also option to chat, right? One by one, raise your hands. I need all of your participation. Yeah, good, obedient student. Well done, well done, well done. All of you, try to raise your hands because it's your first day. I want to interact with you. I want to know about yourself. Good. What about the other students? Be quick, girls. Be vigilant and sharp. Okay. Yeah, Miss Badir, Miss Bajabeen. Miss Bad, Yes, mute ma'am. yourself and tell me something about yourself. A brief intro. Okay. Okay, ma'am. My name is Misbah Jubin and I'm from Sargodha, Punjab. And I have done my master's in political science and I am also a law graduate. That's it. Oh, that's great. And So I are you doing also any job? done B.Ed and I'm a teacher by profession and advocate too. Wow, these two, there's no competition between teacher and lawyers. So why you choose Yeah, these two fields? What's the reason? actually, It's my question. I do teaching in a college, in a law college. No, that's why I'm a teacher and advocate too. So at the same time, you're doing the both teaching Yes, and ma'am. law. So what did you enjoy a lot? Is it teaching or a law? Teaching. Actually, I enjoyed advocacy, but my father and my family don't like. So I start teaching and switch my profession. But somehow, sometime I think so. I don't like it, but now I have no choice. Oh my God, dear. But it's very interesting. I appreciate you, like being a female, you are like in two professions at the same time.
Yeah. and I love this profession. But I also have the same situation once upon a time when I was interested to take admission in law, but my grandmom didn't allow me because she thought that it's not suitable for the girls, for the female point of view. So Now after every listening you, I profession has remembered my become like time. this. Like in sometime my father is also think so it's not suit you because I'm Sayyid by caste, so this is also a big problem. Do you know, Miss Ma'am also have the same caste. Okay. Yeah. Okay. But thank God, my family is not much conservative as other families. But My yeah, alhamdulillah, my I'm satisfied with this profession too. my father is very conservative and his family is very conservative, but my brothers are not like that. They said do whatever you want to do. I'm here. I can take it, or I'm gonna save you. But now they are all married and Of I course, don't know what sometimes, to do. exactly, Mispa, sometimes we are unable to deny our parents. So we have to follow their instructions. So that's why we have to sacrifice our goals and dreams sometime. But it's okay. It's okay. Thank you I so much, practiced Mispa. the sorry. Yeah. Okay, thank you. I practiced law for 7 years, but now my father said no, no, this is time to quit your profession and do teaching only. I was like, okay. Okay, dear. It's so strange, but yeah, it was also interesting, dear. Teaching is also, you know, that it's a holy profession. It's the profession of prophets. And being a teacher, if I told you, I get a huge respect in this profession, which I think so it's not easily accessible in other professions. So that's why. Thank you, Miss White. It was so interesting to listen you, and you are good at English. Your English is better. You just need to be practice of speaking more and more, and inshallah, soon you will be speak fluently. Okay. Okay, ma'am, inshallah. Thank you, Rizwana. Rizwana, it's your turn, dear. Yes, I'm here. I'm listening. Okay, Rizwana, dear, tell me something about yourself. Yes, I'm Rizwana from Lahore. I have done my MSc Economics, and now I'm a housewife. Okay, Rizwana, so tell me what's the reason for joining SKH and Uh, learning English? I not got you. What you said? I asked you, what's the reason to join SKH? Why are you interested to learn Yes, English? I am Yeah. just as a housewife. I am interested in speaking English. It's really good. It's really. Do you have kids? Yes, I have one son. Yeah. So what's about his age? Is It's, it he is 10 year old oh in which grade he is? in class 5. Oh, so in this way, I think so it would be beneficial for you to communicate with him in English. So because Yes, most of the students in my previous students, they are married and they are housewives, they used to tell me that we are learning English because we want to communicate easily with our kids. Because now you know that English is mandatory for everyone. yes, And same if is the case with you're me. yeah, kids are enrolled in some like white collar schools or in some English medium schools. So English is their medium of instruction. So in this way, it's very important and crucial for the parents to speak with the kids, right? Yes, Here and inshallah soon you will become fluent too, because inshallah. you look passionate. So after getting married, having a kid, you are interested to learn English. Definitely, I'll appreciate you for this reason. Yes. Okay, who is next? Fatima. Fatima Khalil, it's your turn, dear. Yes, ma'am. I'm here. Yes. Fatima, dear, tell me something about yourself. My name is Fatma Halil. I live in Mirpur, South Kashmir. My age is 23-year-old. Okay, Fatima, what's your qualification? My qualification is FA. Okay, so are you doing any job or kind of?
No, think. ma'am. Okay. Are you student still? Are you studying? No, ma'am. All right. So you belong to a very beautiful place, like we can say that heaven on the earth. Yeah, isn't Okay, it? ma'am. Yes, ma'am. So tell me something about your area because I want to listen you. Mirpur Azad What's the Kashmir. specialty? What's the specialty of your area? Mini London. Exactly. It's famous for as a mini London or Manchester, I think so. Also, I have listened these words for that. It's so beautiful place. I think so everyone should even must visit that place. All right. Thank you, Fatma, for introducing yourself to me. Thank you. Hamida. Hamida, are you there? Hamida, are you there? Unmute yourself, dear. Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Hamida. Uh, uh, I live in Karachi. I have completed my pre-medical from AKHS. Now I am pursuing a nutritionist course. Good, that's great. Okay, I have a question. Why you choose this field? Nutrition. Because I want to improve balanced lifestyle and I am more into healthy lifestyle. So you choose this field just for yourself or for helping and for awareness of other people's too? No, for others. but So I firstly, tell me want to something about also your. improve myself Okay, so also. firstly, tell me, Hamida, tell me something about your health. How do you feel about your health? I am very healthy, mashallah, and I am follow healthy Okay. lifestyle. Okay. So, do you follow any proper diet plan to reduce your weight? Yeah, I just recently reduced 6 kg. That's great. That's so impressive. Good. Okay, Hamida. It was interesting to listen you, dear Hamida. Inshallah, in further classes, you will enjoy it a lot. You will learn a lot. Okay, keep it Okay, up. ma'am. Okay, thank you. Always welcome. Nilo. I don't know, is it a nickname or a real name? Who is Nilo? Assalamualaikum, ma'am. Neelam is here. Walaikum assalam. There is Neelam, there is another student. Her name is Nilo, N-double-E-L-O. So I Okay, call okay, her, okay. but she's not listening. I don't know why. I don't know she's here or not. Okay, Neelam, you can continue because she's not, I think so. She's unable to speak and unable to unmute herself. So maybe that's why. Okay, Neelam, you can speak here. Okay, ma'am. I am Neelam from Rawalpindi, and Okay. I am 38 to 39 years old, and Good. I have done my inter only. I have Okay. 3 kids, and I am housewife. That's And great, I dear. want to I'll learn appreciate English. you. I Yeah, want to that's learn the English reason. I think because of so. You my also kids. have the reason for the kids. Yes, Good. So, in which school they are going nowadays? What's about your kids? because Yeah. one of them, one daughter is my college going, and Oh, in really? Fire College, Rawalpindi, and the second one daughter is in O level Mashallah, that's in great. army school, and third one is my boy. He is Okay. 7 to 8 years old, and he is in two or three class. Okay.
dear, but seriously, it's shocking for me because by voice you look so small. It's unbelievable for me to that you have a kids, they are you school going, college going. Seriously, it's amazing, dear. Well done. Yes. So, dear, what's the reason to learn English? This is my nahi, sorry. It's my first and last reason. I want to learn because of my kids now. मुझे इतना explain करना नहीं आ रहा ना English में. It's okay, Yes. it's okay, no problem. As you feel comfortable, it's okay, dear. Yes. I can understand you. So, what's the reason for your case? Because you want to communicate Yes. with them. बिल्कुल Okay. communicate with them and also communication with their teachers now. Of course, So because English is, I think, so mandatory, and yeah. in every schools, even it's a private sector or in a government sector, their medium of instruction is English now. So every parent should Yeah. have awareness about the English to communicate with the teachers and with their kids also. It's good step, and Needham, I'll appreciate you that Thank you so being much. a homemaker, being a mother, you are interested to learn English for your kids. And inshallah, you are Yes. passionate, Thank you you will so much. learn. You will Inshallah. learn. You just have to be practice, follow the instructions, and take the regular classes. Inshallah. Inshallah, ma'am. Thank you. Thank you, Needham. It was interesting to listen to you. Thank you so much. Okay. Yes, about yeah, she's unmuted now. Nilo. Yes, dear. Can I Nilo. speak now? Yes. Firstly, tell me something about your name. It's so unique. Is it real name or nickname? It's my real name. It's not nickname. Okay. So, what's the meaning of your name? I don't know the proper meaning, but it's a short of Neelam. So my father, he decided that he want to Nilo. So I don't know the exact meaning of my name, but it's shameful. But Okay. Okay. I thought that 1 it minute, might ma'am. be. Yes. Yes, sir. The Neelam means a stone, beautiful stone, spire like Neelam yes, stone, yeah, a Neelam is beautiful stone, flower. but I don't know what is the exact meaning of Nilo. Nilo is the short Okay, okay, form. okay, okay, okay. My name is Nilo, not Neelam. Right, right. Have you ever tried to change your name, Nilo? No, I'm okay with this. Okay, fine. Good. It's a short name, but really unique for me. I never ever listened this name before. Okay, Nilo, dear, tell me something about yourself. Okay, so my name is Nilo, and I'm from Sawat, but these days I'm living in Islamabad, and I'm also a law graduate, but I'm not doing practicing. It's due to culturally, it is not acceptable in our culture, and due to patriarchal structure, so it's not easy for me to go into do practice in court. So I'm at home these days, and why I'm learning English, like recently I went to Sri Lanka, and there I felt that it's very important to learn English. They all were very comfortable in English, but we Pakistani, we cannot speak properly. So that's why I have decided to learn English. It's easy to communicate with people, it's easy to connect with people, and also it's a medium to gain knowledge. Exactly. You are so true, Nilo, for sure. English is in every corner of the world, wherever you go. English is compulsory. It's mandatory. Without English, I think so you can't survive easily. You can't communicate with any community. So, unfortunately, in our country, there is no proper scope or there's no proper teaching of English as well. And especially in our educational sector, there is Yeah, the major and drawback. even And yes, responsibility ma'am. is the whole responsibility of the government
But we have to suffer a lot due to wrong policies of the government. But Yes, ma'am, but we everything have is possible in every situation. Yes. ma'am, but we have also like we mostly focus on grammar. We don't think English is the language. Like we are very concerned about our grammar and like we need to Exactly. communicate. We Neelu, don't I was practice. exactly. I was about to discuss this point because there is a huge misconception in our society and country about English language. In all my classes, I try to differentiate this thing and want to clarify this thing to my students that if you just want to speak English for speaking purpose, grammar is not mandatory. It's not essential to learn whole about the grammar, but you have to know about the basics of the grammar, like noun, pronoun, verbs, adverbs, and tenses. Just you have to know about like a basic of these things. But if you want to become a writer as well, if you want to like become a writer of English, then you have a huge command and you have in-depth knowledge of grammar. But people, they are unable to understand. They just know that if they are good at grammar, then you will be able to speak English fluently. But this is a wrong conception. I always try to clear these things that if you just want to speak for spoken purpose, grammar is not essential. But I won't say that no need to learn grammar. You at least have to learn the basics of the grammar so Yes, that you can make the sentences in a proper way. Because to make a sentence structure, grammar, understanding of the grammar is important. But the whole grammar and to imitate all these things, it's not necessary. Because if speaking, there are so many ways, there are so many terms. We can make sentences in the different ways. There yes, are ma'am. many ways to make the sentence while speaking. And if I told you about the foreigners, seriously, most of the foreigners, the Britishers and the Americans, they even don't know about the grammar, but they are fluent in English because Yes, it's yes, their ma'am. mother tongue. Yes, But ma'am. we people don't know about these things, and we always like stuck in this thing. If we will learn grammar, then I will become able to speak English. This is the wrong thing, wrong Yes, conception. ma'am. Ma'am, my native language is Pashto, and I don't know about the Pashto grammar, but I can speak Pashto. So, same for the English. If we try to practice, if Exactly. we so Exactly. And you know that in foreign countries, they don't teach grammar to their kids, but their kids also speak English fluently just because they have atmosphere of speaking English and English is their mother tongue, and they focus on speaking, not on the grammar. So that's why Pakistani people feel difficult to speak English because they don't know exact that how much English is important and how much grammar is important for themselves. Inshallah, in after a few weeks, my dear students, you will feel and you will make different choices. And you will understand the things which are going to tell you, which are going to like at starting it would be difficult for you to understand me, but after taking few classes gradually you will be able to understand what I'm going to tell you, what I'm going to teach you. Spoken and writing both are different things. Firstly, focus on your spoken. When you will become fluent speaker, when you will speak fluently, fastly, then you start enhancing your knowledge about the grammar. Okay, I Yes, think so. ma'am. All of you will be able to understand me now. Yet. Okay, thank you, Nilo. It was interesting to listen you. Fatima Khalil. Fatima, have you done? I think she have done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Ma'am, Annie? allow me, I ask one question of Hamida. Yeah, sure. Hamida, how do you reduce your weight? I think so. Hamida is not here, so that's Okay, why ma'am. she's not responding. Okay. Yes, Annie, are you there? Because other students are also waiting. There's a huge list of students. They are raising their hand. I want to communicate with all of them. Yes, Hello, Annie, are you Assalamu there? alaikum. Walaikum assalam. How are you, ma'am? I'm pretty well. How about you, Annie? Alhamdulillah, Allah ka shukar. I'm good. That's great, dear. Tell me something about yourself.
I'm from Lahore right now, living in Okay. a Lahore city, and I have master's degree in accounting and finance. Recently, I joined a company, a US company, recently, no? Just but Okay. there is a gap between the company and me. How do I speak? How do I express myself? How? There is a in Pakistan, if we speak something, it is hell difference between the native. You can understand? Are Of you course. getting me? Yes, 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 This is because they have their accent. I know very well. they put me on hold because first I have to improve my English. Okay. So that is why I'm here. I need to learn things. Uh, if I talk about my atmosphere, my surrounding, all of Yeah. them speak Urdu, like native language. So you can say the bad luck for me or for the entire Pakistan people. We are, Exactly, Annie, I agree yeah. with you. You are so true because most of the students they complain me, they share their problem with me, and they used to say that, ma'am, how can we speak English fluently? Because our parents don't know how to speak English, our relatives don't know, our friends don't know how being a singer we can communicate English. Because if we want to speak English, the other peoples are not interested to speak English with us. Or they So feel we are arrogant. yeah, exactly. They feel maybe the people are trying to like show off and they are like That is the try thing. to impress others. So that's why they are learning and speaking this. No, this is the wrong thing. But any one thing I want to tell you, there Yes, are yes, ma'am. always a way out, always a way out. I figured it out. That Mm. is why I'm here. Yeah, because in our country, in our society, unfortunately, Yes, ma'am. I must say that in every like families, instead of the like if we talk about the big cities, but in our remote areas, people are used to speaking their mother tongue, either Punjabi, Pashto, or secondly Urdu. And one thing, ma'am, I noticed when Yeah, I worked for 1 week, na, for the company, uh, yeah. American company. So Hmm. what I noticed, how they speak, it is hell difference. How we speak in Pakistan, completely different. They speak very polite English, very polite English. One of my boss, he's in Texas, so Hmm. I had one Zoom meeting with him. So Hmm. when I interacted with him, na, so Hmm. he speaks very simple to me. Na? He See, was the very reason simple to me. behind that, Annie, the reason behind that is they want to able you understand. But Yes, in ma'am. our Yes, ma'am. country, people try to underestimate you. Perplex question, like perplex situation, they create the Exactly, perplex exactly. question. Yeah. And one thing more, why we people are unable to understand Britishers and US peoples, because British there's a peoples are hell. I don't because the reason, understand a let single me word of explain. them. Let me explain the reason. Because they have British accent. Yes, And ma'am. as well as if we talk about US people, they have American accent. They They are good. speak in their accent. For They us, are good. it sometimes it feels we feel that, oh my God, we are unable to understand them. How can we communicate with them? But nothing is Yes, sir. difficult. Yes, yes, ma'am. One, You are. two things I'll Yes, ma'am. suggest you to focus. Yes, Mark ma'am. my words, Sure. these two things keep always with you. Firstly, try to develop the habit of listening English. Okay, That ma'am. is the most important, like more important than speaking. Listening is more important than speaking, as I told you, And because of my own experience. the Try second to, point. second thing is that speaking, if you don't Okay. have anyone to speak with you, like in your relatives, in your Hmm. siblings, in your parents, just straight stand in front of the mirror, try to speak with yourself Okay, ma'am. at least 15 to 20 minutes on the daily basis. If you will speak English with yourself too, believe me, you will feel huge change in your spoken.
And I listening, because, yeah, basically I daily watch podcast, American podcasts. listen. But Podcast is, I think so. Listening is better, not yes, watching. Yeah, no, I listen. I listen. yeah. Basically, it is on YouTube, so I can see them. I can There listen them, and even in there their are so subtitle. many ads. There are so many Okay, ads. ma'am. I'll suggest Okay, you. ma'am. In my next class, I will suggest you few channels. If Okay, ma'am. according to your desire, if you want to learn British accent, then I'll suggest you a British channels. If you want to learn No, American accent, American. Yes, ma'am. okay. And there are also so many like informative channels, and they're vloggers, they're instructors. They just, you have to listen them. While listening, you will feel huge change. Seriously. Okay, ma'am. And you will be you will, and when you will imitate them, imitate means try to follow their accent, try to repeat the words they used to say. Imitate means copy. Yeah, exactly. Yes. In Urdu, we have to say that unki copy करे, unki हाँ. nakal karna ya ratta lagana, Nakal. whatever. Yeah, Yeah. imitate. I know the word. Yeah. I know the word. I Yeah. So try to develop these habits. Inshallah, within a month, I bet you will be speak fluently in your Inshallah, ma'am. desired. Inshallah. And one thing more, I want to clear and want to tell you, all of them, Yes, ma'am. the students who are present in this class, you know that at this platform in SKH, there's not only just speaking class, there are a proper sequence. Like there is a discussion class, there's a spoken class, there's an accent class, there is a grammar class, there's a pronunciation class, there's a different series of classes. So if you will attend the different classes with the different instructors, with the different teachers, then you will feel change in your learning, in your spoken. So that Inshallah. is a beneficent thing for all of you people. And one day you will like you will tell me, yes ma'am, you were true. Yeah. As I told before, I figured it out how I can speak fluently. That is why I joined this program. I am very hopeful. One day I will be just Inshallah, as I Annie, came to all of myself. you guys, Yeah, all of all you of will you. be I successful. wish all of them. Okay. I wish all of them. Yeah, for sure, dear. Thank you, Annie. It was Thank you, ma'am. really nice to listen you. You share your Thank you. experiences. Yeah. Thank you so much. Always welcome, dear. Saima. Yes, Saima, dear, are you there? Saima, are you there? Saima, unmute yourself, dear. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Ma'am, how are you? I'm good, dear. How about you, Saima? I'm good, alhamdulillah. Yes, Saima, tell me something Ma'am, my about name is yourself. Samya. Okay, Samya. Okay, dear. My bad. Yes, Samya, dear. Ma'am, my name is Samya. I'm from Rawalpindi. I live in Rawalpindi, and I am Okay. 25 years old. Okay, Samya. Are you a student or a housewife or are you doing any job? Ma'am, I am a student of second year and also a Mm-hmm. housewife. Okay, that's good, dear. Good, that's great. Like you are And I doing have a daughter. multitasking now. Oh, that's She's great. about 6 years old, and she's also listening to a lecture with me. Oh, that's great. Say my hello to her. And by my love and regards to her. What's her name? Afrisham Zahara. Her Sorry, name I is didn't Afrisham get Zahara. you. Her name is Afrisham Zahara. Afrisham. Afrisham. It's so unique Yes, ma'am. name, dear, and really hard for me to pronounce this. What's the meaning what's the meaning of this name, dear? Ma'am, soft things. Okay. From where you discovered this name? Ma'am, I search on Google. Okay. Yes, ma'am. Okay. That's good. It's so unique name, dear. Seriously. So, Saima, why do you want to learn English?
Ma'am, I want to go China for higher studies. Okay. And I want to communicate with people in Of China course. who Yeah, do exactly. not It's important. understand our national language. Yeah, Uh, exactly. because last month I went Thailand and I could not understand anyone there. Okay, you went there for study purpose or just visiting? No, not. I visited just with my family, my husband. Okay. Okay. So now you want to move China for higher studies, right? Yes, ma'am. It's a good decision, And dear. Yeah. I changed. Come I want to uh, speak in English because I want to change my mother tongue Punjabi accent. Dear, yeah, of course, you're so true. And one thing, as I told you before, everyone listen just to me because English is not difficult. We just have a mindset that it's difficult and it's really hard to speak English. No, not at all. It just demand practice. The more Yes, you ma'am. will be practice of speaking English, you will get easily fluent of it. You will speak in a like flow. The reason behind that, why you people are not able to speak fastly and fluently, because you are not used to of speaking it, right? Yes, ma'am. So when you will develop this habit, and in this atmosphere in SH, one thing I also want to tell you all that there is mandatory to speak English. It's not allowed to speak Urdu. Even now, I allowed you because you are new. It's your first class with me. It's your first interaction with me. For that, it's allowed. But now, further in other classes, it's not allowed. If I will allow you to speak Urdu, so how can you able to understand and learn English? So this is I would say that it's your good luck that you are here in this atmosphere. And you will say, because in my previous classes, most of the students, they had a wrong conception about online classes. They thought that before taking classes, they were used to say that there is no use of online class. How can is it possible to learn a language in online class? But after completed their session, after completed their level, they believe me, they said that I think so the best way to learn language, especially English, is the online, because in physical Inshallah. there's a different scenario, and believe me, you will feel change. So no Ma'am, need to I get worried. saw very like a lecture of Sir Hasib on YouTube, and Hmm. I think inshallah we will learn One thing, dear, like if we practice. if I told you there are so many institutions, online institutes भी हैं और उसके अलावा colleges भी हैं और different जो है इदारे हैं जो बच्चों को ये services दे रहे हैं. Yes, लेकिन ma'am. रीजन ये है, मैं अगर आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से, वो ये कहते थे कि जब भी वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से ना घूम फिर के फिर यहाँ आए थे, तो वो कहते थे कि मैम हम जहाँ भी जाते हैं हमें ये बताया जाता है आपने ये बोलना है, आपने ये पढ़ना है, टीचर्स आते हैं लेक्चर दे के चले जाते हैं, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता. हमारी डेली क्लासेस में बस लेक्चर दिया जाता है, टीचर्स आते हैं, वो खुद अपनी इंग्लिश बोल के और समझा के तो वो चले जाते हैं. इस प्लेटफॉर्म में आपको सबसे मेन एज या बेनिफिट ये है कि हम लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको फोर्स करते हैं बोलने के लिए. हम आपको सुनते ज्यादा हैं, आपको मौका देते हैं. अगर 20 या 30 क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है ना, तो हर किसी को क्योंकि मौका दिया मैम जाता है बोलने का. हम सबको एक टॉपिक प्रैक्टिस रखते की हैं. जरूरत होती है, सबको एग्जैक्टली प्रैक्टिस की हम जरूरत एक होती है, टॉपिक रखते वरना हैं, वो ग्रामर टॉपिक सबने रैंडम बचपन से होता है. पढ़ी होती है. हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड वो टॉपिक्स होते हैं, उस पे आपको बोलना होता है. और आप बिलीव करो कि शुरू में जो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक लफ्ज नहीं बोल सकते, बट ग्रेजुअली जब वो दूसरों को सुनते हैं, वो हमें सुनते हैं, तो वो खुद से सुनने से ही उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है कि after 1 or 2 weeks they started speaking fluently within a flow. So just everything takes a time. मैम After ये 2 or 3 प्रैक्टिस की weeks, बात है ना, क्योंकि सब ने ग्रामर बचपन से पढ़ी है. सबको जो वर्ड्स है वो बचपन से आते हैं, लेकिन उनको उसे सेंटेंस बनाना नहीं आता.
साम्या, अगर हम नॉर्मल रूटीन की भी बात दो करें, चीजें मैटर करती हैं बच्चे, एक प्रैक्टिस और दूसरा एटमॉस्फेयर। अब जी हर घर में बच्चे हैं, मतलब उन्होंने मास्टर्स इवन किया हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश क्यों नहीं यस बोल मैम, सकते? क्योंकि उनके घर में इंग्लिश का एटमॉस्फेयर नहीं है। घर वाले इंग्लिश यस बोले मैम, तो वो ऐसा भी ही है। बोले, वो किसके साथ बोले? सो दैट्स द रीजन। एंड इन व्हाई आर यू लर्निंग थ्रू द क्लासेस, देयर इज अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर. So in this way, you will learn a lot. That's my main motive to tell you and to aware you about these things. इंशाल्लाह Okay. मैम, जहाँ तक मैंने Yeah. इनके लेक्चर देखे, मुझे लगता है कि जो इनके लेक्चर प्रॉपर लेगा, प्रॉपर टाइम देगा, तो इंशाल्लाह वो बोलना सीख जाएगा। Yes. That's the main point. If you will be focused towards your goal, your achievement, then definitely you will learn. And if you will be इंशाल्लाह, non-serious, if you will be non-regular in your classes, then there's no possibility to learn, because your attention, your focus, that is mandatory to learn anything in every profession. Thank you, dear. It यस was मैम। nice to listen to you, Samya. Okay, who is next? Uh, who is next? Sarah. Sarah, do you want to speak? Okay, Husna, are you there? Husna Majid? Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Husna. Yes, Husna, dear, introduce yourself to me. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Husna, are you there? My name is Usna. I live in Okay. Quetta. Okay. And I'm a student of 10th class. Good. Okay, Husna, And tell me something I about speciality of your city, as you belong to Quetta. Husna, मुझे ये बताओ कि क्वेटा किस चीज के लिए फेमस है? या वहाँ की Yes, yes, Husna dear, carry on. I'm listening you. अच्छा, मुझे ये बताओ हुस्ना कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? Students, am I audible to you? अस्सलाम वालेकुम। टीचर, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, और ज़रूरत भी है। ओके, गुड। तो हुस्ना बोलिए ना, मैं आपको सुन रही हूँ। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बच्चे? Be confident. You can speak whatever you want to tell. You can speak even if you are unable to speak in English. उर्दू में बात कर लो, लेकिन बात तो करो। आप मुझे सुन रहे हो हुस्ना? I think so. She's facing some connectivity issues, so that's why she's unable to understand me, and I'm also unable because she's not audible to me. It's okay. Dear students, try to communicate, try to speak. No need to get worried if you are not good at English. I'm not here to find your अस्सलाम mistakes. वालेकुम। I'm here to facilitate you. Yes, Walaikum assalam, Sarah. How are you, ma'am? I'm good, Sarah. How about you, dear? I'm pretty well. That's great. Sarah, introduce yourself to me. I live in Peshawar, Punjab, and I have done my master degree in English literature. Okay. And I am a teacher by profession. But personally, Good. I don't like this profession. So I am in this profession by chance, not by choice. So, what was your choice, Sarah? I want to become a assistant commissioner. Okay. So have you ever tried for that?
Ma'am, I have completed my degree in 2023. Means Okay. recently completed my degree. Okay. So first, I will work on my English language and then I will start preparation for the test. Of course, that's good decision. I'll appreciate you, Tara. And you know that if you will be focused and passionate towards your like goal, so definitely one day you will achieve this goal. Okay? Yes, So ma'am. be persistent Actually, and ma'am, consistent. in BS English, teachers teach us everything about English, but not about English language. That is a major problem of our educational system. Seriously. Now there are some institutions they are providing facility to speak English, but before that there was no concept of speaking. They teach a lot, but students are seriously unable to speak any single word. So I can Yes, understand this ma'am. situation, but it's good that every level, if you are passionate, if you want to learn English, so you can. It's not difficult. Every person, even uneducated person, they can speak English very well. You know that. Yes, ma'am. Thank you, dear. It was interesting to listen to you. Inshallah, in our next classes, we will learn a lot. We will enjoy it a lot. So, Okay, Assalamualaikum, ma'am. ma'am. Walaikum assalam. Who is this? I'm Haya. How are you, ma'am? I'm good. I'm good, dear. How about you? Haya, Hashir. Introduce Ji, yourself to me, dear. Ji, ma'am. How are you? I'm good, dear. Tell me something about yourself, Haya. Okay. My name is Rizwana, but my nickname is Haya. Okay. From where I you like belong to, dear? I like this name because my this name my husband this name take me. Okay, good. From where you belong to? I'm from Lahore. Okay. And what's your qualification? Matric. Okay. So why are you interested to learn English? What's the reason? I want to know. I am Quran teacher, online Quran teacher. So Okay. some students learn Therefore, more in like, English. Yeah. yeah. Okay, so that's the reason. Since how long you are teaching in online? Sorry? Since how long? From how many time you are teaching online Quran? Last 2 years. How is it? How about your experience of teaching Quran online? Yes. Is it good experience? My English is not good, but I trying to speak English. I have no confidence speak English and No speak English. problem, dear. No problem, and no need to feel shy. Okay. You are new But here, and you are. yeah, It's good that you are learner. Okay, so definitely you will make mistakes, and it's my responsibility to make you able to speak English. Okay, but the one thing I repeatedly told every student that try to take the regular classes. Never ever miss any class. If you will be regular on the daily basis, you will learn something new. जी जी इंशाल्लाह. So here, Haya, inshallah, one day you will also speak English fluently, okay? जी इंशाल्लाह. And next time, don't say my English is not good. Always used to say, yes, I'm confident and I can speak English fluently. Okay. Right? Yeah. जी मैं बहुत देर से इंग्लिश के समझ ली मुझे ना बहुत क्रेज है इंग्लिश सीखने का, लेकिन मैंने इधर से तमी भी किया हुआ है आलिमा कोर्स और Good. That's great.
वो कवायद के साथ तजवीज के साथ कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है, तो अब मैं ये कुरान पाक पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं ना इंग्लिश में भी क्लासेस लूँ ना, कुरान पाक, ये मतनी कायदा और कुरान पाक पढ़ने की ना, इसलिए मुझे इंग्लिश का एक तो शौक बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत शौक है कि मुझे इंग्लिश आए। तो अब तो एक बहाना भी था कि अब कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हमने इंग्लिश में भी पढ़ना है, तो मैंने कहा चलें अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लेके स्टार्ट करती हूँ, तो इंशाल्लाह मंजिल मिल ही जाएगी। For sure, Haya, I'll appreciate you firstly, seriously. And I'm really delighted to listen you that you have a knowledge about religion, a huge knowledge. Every people don't have such knowledge. And in spite of that, you are learning English. So that's a good thing, seriously. And I think so everyone should keep these things in our mind. We must have to know about our religion, our religious knowledge, as well as our the knowledge about the world. So both are important. So yes, Haya, इंशाल्लाह जितना आपको शौक है ना आप जरूर सीखेंगी, और आपके पास जितना ऑलरेडी नॉलेज है आप उसको यूटिलाइज करो, और साथ इंग्लिश को भी और इसमें भी कम्युनिकेट करो, इंशाल्लाह one day you will be successful. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह. Thank you, dear. Always welcome. Fatima. Oh, sorry, Bushra. Bushra, it's your turn because you are waiting for so long. After Assalamu Bushra. alaikum. Yes, walaikum assalam. How are you, ma'am? I'm good, Bushra. How about First, you? I am good. First of all, thank you for giving me a chance to introduce myself. My name is Bushra. I am from Faisalabad. My complete graduation, study graduation. That's it. So, Bushra, dear, tell me, why are you passionate to learn English? What's the reason to learn English? My need, actually my passion, my need. I am hardworking woman. My professional work. What is your Everything I profession? need. Bushra, what's your profession? A beautician. Okay, yeah, that's good. Yes. I'm observing that there are lawyers, there are dietitians, practitioners, teachers. It's a Yeah, combination. man. It means our class is gonna be very interesting, seriously. Thank you, man. There are so many talented Mom, people in my class actually, and I professionals. yes, ma'am. I think मैंने स्टार्ट लिया था एच के स्टार्ट में, मतलब कि अभी जो ग्रुप किया है ना उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. सो मतलब घर में काफी टेंशन पड़ गई थी सिस्टर की वजह से. फिर वो मैंने मतलब कि वो सर से बोल के वो आगे मैंने कर दिया कि अब क्लास मैंने लेनी है. एवरीथिंग जो है ना कि पीछे मेरा रह गया था, तो मैं इनकी थ्रू ही पुरानी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वाला जैसे कहते हैं ना क्रेज है कि मुझे इंग्लिश आ जाए. मेरे फियोंसी जो हैं वो यूके में रहते हैं, और इसलिए कि मुझे चले जाना है, तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इंग्लिश आ जाए. मैं इतना ज्यादा इस पर टाइम देती हूँ, बट मैं बोलने में फिर वो कंफ्यूजन टाइप हो जाती है. So, dear, no problem. If you will be regular, because before that you told me that you were not regular due to some domestic reasons, but now, if you will be regular within a month, Inshallah. dear, it's just a 1 month game. Within a 1 month, you will become fluent, and you will able to speak in English in a flow, because you are talented. You can learn. You can achieve. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Always welcome, Bushra. Yes, Lubna, it's your turn. Then Mirza. Walaikum assalam. How are you, ma'am? I'm good, Lubna. How about you? I'm also fine, and it's an honor to the chance given to me in SKH Academy, because I am the student of this online platform for the last 3 years. Okay. But I'm speaking English in front of you or any other teacher the first time. Okay, that's so surprising. It's Have a you great ever honor taken for my me, class? and I want to thank you and thank you, Sir Khwaja Hasibur Rahman, that providing me this platform to speak in front of all.
you warm welcome again, Zubna, in my class. I'm seriously delighted to listen you. Thank you so much, ma'am. And I'm from Karachi, and by profession, I'm also a teacher of literature and language for grade 4 and 5. okay, good. Sorry for interruption. But this is Sir Sibur Ahmad, and I have another session after this, so I will have to say you goodbye. Thank you so very much, and I think you must have had a very good time with Miss Tabassum. And if you want to join this her session officially, kindly get yourself registered and join Miss Tabassum Monday to Wednesday, live on Zoom at 9 p.m. And she's a very competent and very cooperative and friendly teacher, and you will have a very good time. Thank you so very much. Inshallah, see you tomorrow at 3 in pronunciation session and also at 8 o'clock. You have 2 sessions with Miss Mariam tomorrow. Thank you very much. Assalamu alaikum.